हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिकोड सिविल। इस वीडियो में मैं सर्वेइंग के क्वेश्चन नंबर 11 to 20 जो कि ये इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में पहले आ चुके हैं डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करूँगा। सो मेरा ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर इक्वल टू 1 एकड़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड that how much is this 1 acre. So 1 acre को हम बेसिकली एक एरिया से रिप्रेजेंट कर सकते हैं which is having a dimension of 242 feet in length and 180 feet in its width. So the area will be the length of land and the width of the land. So that is 180 by 242. So that will be, that is 0, 18 to 36, 475, 43560 square feet. So 1 acre is equal to 43560 square feet. So that is clear. So that means your statement 1 is correct. Then what is this guntas? So there are certain conversion factors. So guntas is basically your land areas in square feet divided by 1089 square feet. That will give you the values in guntas. So since we got the area as 43560, तो इसको डिवाइड करेंगे 1089 से and we will get the value in guntas. So that will come out to be 40 guntas. So that means कि जो हमारा ऑप्शन 2 है ये भी करेक्ट है. Then moving on to the third one, that is Gunter's chain. So फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि किस तरह की चेन हमारे पास अवेलेबल होती हैं. सो बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ मेट्रिक चेन्स देयर वर सर्टेन स्पेशलाइज्ड चेन्स जिनको हम यूज़ करते थे फॉर योर सर्विंग पर्पसेस. तो उसमें मेनली हमारी 3 तरह की चेन होती थी: काउंटर्स चेन, रेवेन्यू चेन एंड इंजीनियर्स चेन. और ये चेन थी दोज आर मोस्टली डिवाइडेड इनटू 100 लिंक्स. गंटर चेन जो थी दैट वाज 66 feet long with 100 links, while the revenue chain was 33 feet long with 16 links, and engineer chain was 100 feet long and of 100 links. So you need to be careful with these values. So Gunter's chain was 66 feet long, revenue chain was 33 feet long, and engineer's chain that was 100 feet long. Now this 1 acre can also be represented by an area which is having dimension of 66 as its width and to 660 as its length. So that will also come out to be 43560 square feet. That is equal to 1 acre. Now we know that 66 is the value of one length of Gunter's chain. So if we adjust some values here, so we will get it as 10 into 66 ka square. So that means that will be 10 into Gunter's chain length ka square. So that means the third option which was given as 10 into square of Gunter's chain, that is also correct. So that will be 10 square of Gunter's chain. Then the last one is in square yards. So we can convert the value of area into square yards by dividing the area with the value of 9. So we got the value of area as 43560. So dividing it the value with the 9, we will get 4840 square feet in square yard. So in square yard the value obtained is 4840. Now if this option has been given as the correct one, so we could have marked it as the right one because the difference of 10 is very minute. But since in the options only three of the options are correct, तो हम इसमें से 1 2 3 वाला ऑप्शन ही मार्क करेंगे. So that means 3 or 4 statement will be wrong. So the correct option for question number 11 would be option A. So moving on to question number 12.
what is the slope correction for a length of 30 meter along a gradient of 1 in 20. So that means if we are measuring a distance along the slope, okay, आपको distance जो measure करना था that was along this horizontal length, but you measured the distance along this slope, and जो आपकी value है ये length की along the slope, that is L, which is at a height of h. So your actual length that was to be measured वो कितना होगा? From Pythagoras theorem that will be square root of L square minus h square. So the correction is the difference of true value and the measured value. So your true value is the distance that was to be measured, that is square root of L square minus h square minus measured value, and the measured value is L. Now using binomial expansion we get this value as minus h square by 2L. So that means to find out the value of correction निकालने के लिए हमें यहाँ पर दो वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो L की वैल्यू की एंड सेकेंड वन इज द वैल्यू ऑफ h, सिंस द करेक्शन विल बी माइनस h स्क्वायर बाई 2L. सो ये जो वैल्यू आएगी आपकी L की वैल्यू तो आपको दी हुई है, दैट इज 30 मीटर लेंथ. नाउ दिस ग्रेडियंट इज ऑफ 1 in 20. दैट मीन्स इफ यू आर मूविंग 20 horizontally, if you are moving 20 distance horizontally, then you are getting up by 1. So that means कि अगर हम इसके corresponding value निकालें slope की, that will be equal to 30 मीटर. मतलब इसका slope कितना आएगा? That will be square root of 400, that is 20 square plus 1 square, that is square root of 401, that is corresponding to value of 30 meter. So value of 1 will be corresponding to 30 upon square root of 401. So that is the value of h. Now the correction will be minus h square by 2L. Since the value of h is 30 upon square root of 401 into 1 by 2, and L value is also 30. So you will get this value as 0.0375 meter, which will be equal to 3.75 centimeter. So your correct option for question number 12 will be option A. इसको क्वेश्चन को करने का जो दूसरा तरीका होगा, दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस सिंपली द वैल्यू ऑफ L. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट दिस वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, और उसमें से L की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. देन ऑल्सो आपको यही वैल्यू मिलेगी, दैट इज 3.75 सेंटीमीटर. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. A 30-meter metric chain is found to be 10 centimeter too short throughout a measurement. If the distance measured is recorded as 300 meter, then what is the actual distance? So इस तरह के क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से देखे थे. So the actual length of the chain is 30 minus 0.1, since that is 10 centimeter too short, so 30 minus 0.1, that will give us the value of 29.9 meter, while the measured length is 30 meter. So the actual distance measured on ground, that is basically the L dash, that is your actual length, divided by L, that is measured length, into the measured distance, So your L dash is 29.9 divided by your measured tape length is 30 and your measured distance is 300 meter. So you will get this value as 299 meters. That is your actual distance. So in actual, the distance on the ground was 299 meter,
बट यू रिकॉर्डेड इट एज 300 मीटर। इसका मतलब यह है कि जब भी आपका चेन टू शॉर्ट होगा आपको वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, एंड वाइस वर्सा विल बी ट्रू फॉर टू लॉन्ग चेन। मतलब जब भी आपका चेन टू लॉन्ग कंडीशन में होगा तो एक्चुअल कंडीशन में आपकी लेंथ ज़्यादा होगी, बट यू विल बी रिकॉर्डिंग अ लेसर डिस्टेंस। सो द करेक्ट ऑप्शन for question number 13 will be option C. So now moving on to next question. Question number 14. A 20-meter chain was found to be 10 centimeter too long after chaining a distance of 2000 meter. It was found to be 18 centimeter too long at the end of day's work after chaining a total distance of 4000 meter. What is the true distance if the chain was correct बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द डेज वर्क? जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि वेन एवर द चेन इज़ टू लॉन्ग, जब भी आपका चेन टू लॉन्ग कंडीशन में होगा दैट मीन्स कि जो आपका एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा, बट द डिस्टेंस रिकॉर्डेड विल बी लेसर वन। तो आपने जो टोटल डिस्टेंस रिकॉर्ड किया दैट इज़ 4000 मीटर। सो दैट मीन्स तो जो ट्रू डिस्टेंस होगा वो आपका ज़्यादा आएगा निकल के। सो दैट मीन्स कि हम डायरेक्टली ये दो ऑप्शंस ए एंड सी को रूल आउट कर सकते हैं। नाउ इट सेज कि जब आपका चेन वर्क शुरू हुआ है इट इज़ बीइंग डन इन स्टेजेस। पहला जो स्टेज था दैट वाज फ्रॉम 0 to 2000, देन द सेकंड स्टेज वाज फ्रॉम 2000 to 4000 मीटर चेन लेंथ। सो फ्रॉम 0 to 2000 मीटर चेन लेंथ it was found to be 10 centimeter too long at this point, and at the point of 4000 meter it was found to be 18 centimeter too long. अब क्योंकि ये डिस्टेंस एट द पॉइंट ऑफ ज़ीरो इसमें दिया हुआ है कि द चेन वॉज करेक्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ डेज वर्क, यानी कि जो ज़ीरो पॉइंट होगा उस पर आपका जो चेन था दैट वाज करेक्ट। सो दैट मीन्स दिस ये जो 10 सेंटीमीटर का वैल्यू जो इंक्रीज हुआ है दैट द 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग वैल्यू, ये आपका इस कंप्लीट 2000 मीटर के डिस्टेंस के अंदर ही हुआ है। सो वी विल डिस्ट्रीब्यूटेड बाय टेकिंग एन एवरेज वैल्यू। सो वी विल एज्यूम कि ये जो वैल्यू इंक्रीज हुई है दैट इज ऑफ 0 + 10 सेंटीमीटर बाई 2 दैट इज 5 सेंटीमीटर टू लॉन्ग थ्रू आउट द डिस्टेंस ऑफ 2000 मीटर। नाउ द सेकेंड केस इज द चेन इज 18 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। सो दैट मीन्स कि जो ये आपका 2000 वाला पॉइंट था इस पर ऑलरेडी आपकी जो वैल्यू थी दैट वाज 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, तो टोटल डिस्टेंस पड़ा है एट 4000 दैट इज 8 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। सो यहाँ पर भी सेम केस लेंगे, हम एवरेज वैल्यू करेंगे कि 2000 पे कितनी वैल्यू है 10 और एंड पॉइंट पे है 18 सेंटीमीटर। सो द एवरेज विल बी 10 + 18 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट विल बी 28/2 दैट इज 14 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। ये वैल्यू कंसिडर करेंगे हम फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 2000 फ्रॉम 2000 to 4000। अब हमें टू लॉन्ग की वैल्यूज पता है। नाउ सिंपली पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज वी विल गेट द ट्रू डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। दैट विल बी नाउ कंसिडरिंग फॉर फर्स्ट 0 to 2000 meters, that will be actual distance will be the actual distance that is since the value is 5 centimeter too long और जो चेन था आपका that was of 20 meter, so that will be 20.05 divided by the incorrect length that was 20 and measured distance is 2000, so you will get the value as 2005 meter. Now taking the value from 2000 to 4000 meters, इसमें जो आपका incorrect distance है that is 18 centimeter to 14 centimeter too long, that is 14 centimeter too long, so that will be 20.14 divided by 20 into 2000, so that will be 2014 meter. So these two are the actual distances which are being observed on the, which are actually there on the ground. So the actual distance of the ground will be, on the ground will be 2005 plus 2014. So that will give us the value as 4019 meter. Now looking at the options, so that means the correct option for question number 14 will be option B. Now moving on to the question number 15.
a scale of 1 inch is equals to 50 feet is mentioned on an old map. What is the corresponding equivalent scale? Now this 1 inch is equals to 50 feet ये दिया हुआ है आपको, तो आपको ये कन्वर्ट करना है इनटू इंजीनियर स्केल. सिंस 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 centimeter and 1 feet is equals to 0.3048 meter. तो इस वैल्यू को अगर आप इक्वल करेंगे दैट विल बी 2.54 centimeter, that is equals to 50 into 0.3048 meters. So you will get it as 1 centimeter is equals to 6 meter. So the correct option for question number 15 will be equal to option B. Now moving on to question number 16. An inward tape 50 meter in length, standardized at 20 degrees Celsius temperature on 10 kilogram pull, is used to measure a baseline. The correction per tape length if at the time of measurement the temperature was 30 degree and the coefficient of linear expansion of tape was 1 into 10 to the power minus 6 per degree Celsius will be. तो correction कितना होगा per tape length के लिए? So for temperature changes we have a correction formula, that is alpha into Tm minus T naught into L, where Tm is the mean temperature during the measurement while T naught is the standard temperature, that is the temperature at the time of standardization, while L is the measured length in meter. तो आपको सारी values given है. The value of alpha is 1 into 10 to the power minus 6, so putting that value as 1 into 10 to the power minus 6. Tm जो वैल्यू दी हुई है मेजरमेंट के टाइम पे that is 30 डिग्री सेल्सियस. So 30 minus temperature at standardization is 20. So 30 minus 20 into the length of the inward tape is given as 50 meter. So that is 50. So you will get this value as 500. So that is 5 into 10 to the power minus 4 meter. So that will be this option C. So the correct option for question number 16 is option C. Now moving on to the next question, that is question number 17. A rectangular plot of 16 km square in an area is shown on a map by a similar rectangular area of 1 square centimeter. The representative fraction, that is RF, of the scale to measure a distance of 40 km will be. So this to measure a distance of 40 km, that is your redundant data. To find out the value of scale, हमें जो value चाहिए होती है, that is simply your scale is basically area on the map divided by area on the ground. और इस पूरे का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे. सो एरिया ऑन मैप इज़ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर वाइल एरिया ऑन ग्राउंड इज़ 16 स्क्वायर किलोमीटर. अगर इसको कन्वर्ट करेंगे हम इनटू सेंटीमीटर, वी विल गेट एज 16 इंटू 10 to the power 10 स्क्वायर रूट ऑफ सेंटीमीटर. सो फ्रॉम हेयर वी विल गेट इट एज 1 अपॉन 4, दैट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 16, और 10 की पावर 10 का जो स्क्वायर रूट होगा दैट विल बी 10 to the power 5. So we will get the scale value as 1 upon 4 and followed by 5 zeros. So the correct option for question number 17 will be option B. Now moving on to question number 18, that says the magnitude of sag correction during measurement of lengths by taping is proportional to. So what is the value of sag correction? Sag correction की दो वैल्यूज है हमारे पास. It can be written as W square L cube upon 24 P square, where W is the weight of chain per meter in per meter length, और अगर हम WL को that is the weight of chain per meter length into L करेंगे तो we will get the value of chain.
So it can also be written as W square L upon 24 P square. So क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू दी हुई है, ये पूछा हुआ है कि जो सैग करेक्शन होगा दैट इज आइदर प्रोपोर्शनल टू W स्क्वायर और योर W स्क्वायर. सो ये आपका इंडिपेंडेंट है कि आपका किलोन्यूटन पर किलोग्राम पर मीटर लेंथ पर है या फिर सिंपली किलोग्राम में वैल्यू है, बट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर वैल्यू, स्क्वायर्ड वैल्यू. सो द सैग करेक्शन जो होगा आपका दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेट ऑफ द टेप इन किलोग्राम पर मीटर रन. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18 वुड बी ऑप्शन C. So now moving on to next question, question number 19. If the original scale of a negative is 1:10,000, the ground resolution, considering that we get nearly 20 lines pair per mm, will be. Since we are here talking about the ground resolution, that means कि जो आपकी बात हो रही है that is corresponding to aerial photographs. So for aerial photograph, the resolution of aerial photograph is expressed in lines pair per millimeter. That is, number of lines and equal size gap can be resolved. तो मतलब कि अगर आपको number of lines count करनी होंगी in per millimeter of the aerial photograph, that will be double of this value. So generally हमें जो value मिलती है that is 20 lines pair per mm. So that means कि जो हमें ओरिजिनल का 1 वैल्यू होगा दैट विल बी करस्पॉन्डिंग टू 40 लाइन्स. सो दैट मीन्स द 1 वैल्यू इज करस्पॉन्डिंग टू 40. सो योर स्केल विल बी करस्पॉन्डिंग टू 1/40. नाउ इन द क्वेश्चन द स्केल ऑफ द नेगेटिव इज गिवन एज 1:10,000. सो दैट मीन्स ऑन फोटो दैट विल बी वैल्यू ऑफ 1 यूनिट. So on ground that will be of 10,000 unit. Now photo correspond to 1/40 mm. So your on ground the value will be corresponding to 10,000 into 1/40. So that will be 10,000 into 1/40. Now that will be corresponding to 250 mm. जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है. दैट इज 1/20 + 20 इंटू 10,000 mm. सो दैट विल बी करस्पॉन्डिंग टू 1/40 इंटू 10,000 mm, विच विल गिव यू द वैल्यू ऑफ 25 सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड. सो दैट मीन्स कि आपकी जो स्केल पर वैल्यू होगी ऑन फोटो दैट विल बी 1/40 mm और ग्राउंड पर जो वो वैल्यू होगी दैट विल बी 25 सेंटीमीटर. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑप्शन D. Moving on to the last question of this video, question number 20. If L is the length of the chain and W is the weight of the chain and T is the tension, the sag correction for the chain line is. So sag correction जो होता है, if a tape has been standardized while fully supported and is being used without full support, तो जो आपका chain होगा that will take a shape of catenary. So sag अकर होगा इसमें, जिसकी वजह से हमें करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा. विल बी मेजरिंग अ लार्जर डिस्टेंस बट इन एक्चुअल द डिस्टेंस विल बी दिस मच ओनली. सो द करेक्शन विल बी नेगेटिव. सो उसकी जो वैल्यू होगी ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि या तो W स्क्वायर L³ अपॉन 24 P स्क्वायर होगी, जहाँ पर जो आपका W होगा दैट विल बी द वेट ऑफ टेप इन किलोग्राम पर मीटर रन और W विल बी सिंपली द किलोग्राम. तो आपकी जो वैल्यू होगी अगर किलोग्राम में वैल्यू है तो W स्क्वायर L अपॉन 24 P स्क्वायर होगी. सो क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू दी हुई है वो डायरेक्टली चेन का वेट दिया हुआ है, पर मीटर रन में नहीं बट टोटल वेट दिया हुआ है. सो द करेक्ट आंसर विल बी W स्क्वायर L अपॉन 24 सिंस द टेंशन वैल्यू इज गिवन एज T, सो 24 T स्क्वायर. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20 विल बी ऑप्शन B. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे YouTube चैनल डिकोड सिविल को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में सब्सक्राइब करें. थैंक यू.